Okay, so we started Einstein coefficient. Okay, and you have seen that energy density of EM radiation, that is E of nu, what we have observed, that is A21, that is coefficient of spontaneous emission, divided by B21, then you have N1 by N2, then B1 by B2, sorry, B12 by B21 minus 1. ठीक है सर बाहर एक इंटू होगा बाहर नहीं सर करेक्ट है करेक्ट है ना यस हो जाता है ऊपर का बाहर नहीं होगा सर एक N2 आपने मेंशन किया था कल हाँ नहीं ऊपर का N2 और नीचे का N2 कैंसिल हो जाता है ऐसा दिखा था एग्जैक्टली यहाँ पे एक N2 रहेगा ना वो N2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा वेरी गुड यस सर yes very good now then from Boltzmann distribution law we have seen that N1 by N2 that should be equals to exponential h nu by kVt. Okay, now we'll substitute this N1 by N2 here. Okay, if you substitute it, then you will get the energy density of EM radiation will be simply A21 divided by B21 into exponential h nu by kVt. Okay, B12 by B21 minus 1. Okay, now according to Planck's law, the energy density of EM radiation is how much? Anyone? Black body radiation में आप लोगों ने पढ़ा होगा. Energy density of EM radiation is 8 pi h nu q by c cube into 1 by exponential h nu by kBt minus 1. So this is in terms of nu. In terms of omega, so I'll take this two formula. I will take the help of two formula. First, I have taken that formula, that Boltzmann distribution law, that is from thermodynamics and statistical physics, and this is from black body radiation. So in terms of omega, this will be h cross omega cube by pi square c cube into 1 by exponential h cross omega by kBt minus 1. So you know that kBt means Boltzmann constant. Okay. Now if you compare this equation with this, if you compare this equation with this equation, because both are representing the energy density of EM radiation. So what you can infer, you see this term. So you can see A21 by B21 will be how much? A21 by B21 will be how much? 8 pi h squared omega q upon pi square c square. Exactly, very good. And B12 by B21 will be how much? Sir, 1, right? sir. B12 by B21 will be on, right? Equal 1, yes. So what you can write? B12 equals to B21. So the coefficient of stimulated absorption is equals to the coefficient of stimulated emission. So what does it mean? It is the meaning is that the probability of stimulated emission is equals to the probability of stimulated absorption. And also
A21 by B21 will be how much? It will be 8 pi h nu cube by c cube. And also we can write h cross omega cube by pi square c cube. Okay. Now can we write it like h cross omega whole cube divided by h cross square pi square c cube? Okay. So you can write it like this. Now we see that importance of this this ratio. So what will be the h cross omega? Suppose you have two level E2 E1. So h cross omega exactly representing this gap, is not it? So that is delta E, and that will be nothing but h cross omega. Is it clear? जो h क्रॉस ओमेगा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका जो दो लेवल से उनके बीच में जो गैप है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes. So what you can write? Can we write that A21 divided by B21 proportional to that gap between two levels cube, right? 1 minute. सर ऊपर वो सी क्यूब होगा, कौन सा H- सी क्यूब? यू ओमेगा का जो फॉर्मूलेशन. Pi c, sorry, extremely sorry. It will be c cube. Please correct it. It will be c cube. Extremely very good. This should be c cube. Okay. So this ratio A21 by B21, that will be proportional to delta cube. Now you see a ratio of number of spontaneous emission divided by stimulated emission that depends upon what factor the gap between two levels. तो आपको लेजर लाइट के लिए क्या चाहिए? रेशियो कम चाहिए या ज्यादा चाहिए? सर ज्यादा चाहिए होगा. नो, अगर ज्यादा होगा तो आपका स्पॉन्टेनियस इमिशन ज्यादा होगा, बट फॉर लेजर लाइट आपको स्टिमुलेटेड इमिशन ज्यादा चाहिए, नहीं? हाँ सर. Yes, sir. एग्जैक्टली. सो यू सी, तो फिर उसीलिए अगर आपका एक्सरे है, एक्सरे का एनर्जी काफी ज्यादा होता है ना? एक्सरे का एनर्जी काफी ज्यादा होता है ना? यस सर. X-ray and gamma ray, right? So for X-ray omega, for X-ray and gamma ray, omega is very large. It means separation between two levels is very large. So for that case, the spontaneous emission will be dominant over stimulated emission. So that's why X-ray and gamma ray will never produce laser light. Is it clear? सो आपको लेजर लाइट के लिए ये जो सेपरेशन है इसको मेंटेन करना पड़ेगा. हेलो सर. यस. लास्ट स्टेटमेंट एक बार फिर. Yes, what I'm saying, you see, for X-ray and gamma ray, that separation between two levels will be large. So for this case, the number of spontaneous emission will be large as compared to stimulated emission. But for laser light, you need more stimulated emission as compared to spontaneous emission. Or you can say, for good laser, this ratio should be small. But for X-ray and gamma ray, this ratio is large. So that's why X-ray and gamma ray will never produce that laser light. Is it clear? Now Yes, is it clear? sir. Now you see, I'll ask one question. Please give me that answer. एक्चुअली आप लोग जब क्वेश्चन करते हो तो हम लोगों को अच्छा लगता है आंसर देने में, बट इसमें नुकसान आप लोगों का है, क्योंकि हम तो रिसर्च करके बैठे हैं ना, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमारा मेन मोटिव है आपको आगे लेके जाने के लिए. ठीक है. ठीक है, आप ये बताओ, आपका सपोज मान लो माइक्रोवेव है, देन यू हैव IR है, इंफ्रारेड है, देन यू हैव विजिबल है, ठीक है, देन यू हैव UV है. ठीक है.
तो आपका जो आपका A2 बाई B2 किसका ज्यादा होगा? माइक्रोवेव का। Obviously, for microwave it will be large, right? Then A2 by B2 for IR. Then you will have A2 by B2 for visible. Then you have A2 by B2 for UV. सर मतलब माइक्रोवेव्स आदमी यूज कर सकता है लेजर्स को प्रोड्यूस करने के लिए? वेरी गुड। माइक्रोवेव का सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसका होता है? अगर आप ये लाइट यूज करोगे, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किस लेजर में मिलेगा? आपको मिलेगा माइक्रोवेव में, देन IR में, देन विजिबल, देन यूवी। क्योंकि A21 विल बी लेस B2 देन will be dominant. ओ इसीलिए। हाँ, is it clear now? Is it clear? Please give Yes, me sir. your Yes, sir. Okay. So since that ratio is large for microwave, so most intense laser light you will get from microwave. Okay. Now, shall I erase? Okay, I'll use it. Now, if you remember from this previous equation, U nu was how much? Now Sir, B12 equals to B nu, right? So U nu will, हाँ, सर फ्रिक्वेंसी तो सर इनकी ज्यादा होती है ना माइक्रोवेव की और आईआर की। माइक्रोवेव का energy तो सबसे इनकी ज्यादा होता है, ज्यादा- देन IR, yes. तो सर एनर्जी पे तो डिपेंडेंसी है सर इनकी शायद। हाँ, डेली energy- एनर्जी तो है ना सर। हाँ, जो आपको डेल्टा E यूज करो वो एनर्जी है। जब हाँ तो आपका सर ये तो फिर बड़ा होना चाहिए ना सर, ग्रेटर देन होना चाहिए ना सर ये तो फिर। हो हाँ, this should be large. यस सर। This should be large. This should be large, right? Oh, sorry. This should be large. ये आपका हाई होगा, फिर ये होगा, ठीक है ना? यस ठीक है। सर। Now if you remember, U nu will be how much? A21 by B21 into you will have, तो सर जब ये लार्ज हो गया तब तो रिवर्स केस हो जाएगा। मैं ठीक ही किया था, ये सबसे स्मॉल होगा ना? नहीं, सर ये आप कैसे मतलब हाँ किसकी स्मॉल, base पर? हाँ ये स्मॉल होगा, क्यों होगा? स्मॉल ही तो होगा सर। स्मॉल होगा, स्मॉल होगा, स्मॉल होगा। Means ऊपर जो सीक्वेंस लिखा है बट और सर नीचे फ्रिक्वेंसी तो सर फ्रिक्वेंसी तो इनकी अलग उसमें होती है ना डोमेन मतलब देखो कि- इसीलिए स्मॉल होगा, हाँ इसीलिए स्मॉल होगा। A21 by B21 प्रोपोर्शनल टू क्या है? डेल्टा ई, डेल्टा राइट? टू द पावर क्यूब। हाँ, डेल्टा ई क्या है? एनर्जी है। तो एनर्जी किसका कम है? माइक्रोवेव का सबसे कम है ना? देन IR का कम है, देन आपका इसका कम है। माइक्रोवेव का सर माइक्रोवेव का तो ज्यादा होता है ना कि फ्रिक्वेंसी होती है कि वेवलेंथ घटती है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ती है। माइक्रोवेव का सबसे कम होता है एनर्जी। सर वेवलेंथ कम होती है ना तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी तो अपना बढ़ेगी ना सर। माइक्रोवेव का सही। वेवलेंथ ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी कम होता है। सर ये डेल्टा ही है ना सर, एनर्जी डिफरेंस है ये। नहीं, एनर्जी डिफरेंस 2 लेवल का, जब आपका फोटो E2 माइनस E1। हाँ, जो आपका अपर लेवल से जब एटॉम नीचे लेवल में आ जाएगा, तो फिर आपका जो Yes, sir. एनर्जी होगा वो आपका डेल्टा ई रिप्रेजेंट कर रहा है ना? यस सर। हाँ, तो माइक्रोवेव का जो है आपका एनर्जी सबसे लीस्ट होता है, ठीक है? आपको पता है ना, Yes. रामी लक्स जी, आप ये ध्यान रखना, रामी लक्स जी, ठीक है? रेडियो, ऑडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, एल मीन्स विजिबल, यू मीन्स अल्ट्रावायोलेट, एक्स मीन्स एक्सरे, जी मीन्स गामा रे। तो सबसे कम होता है एनर्जी रेडियो, देन ऑडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे। आपको पता है ना, एक्सरे गामा रे का एनर्जी सबसे ज्यादा होता है ना? यस सर। हाँ, ठीक है। तो इसका वेवलेंथ क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। नाउ जो आपका ये था A21 by B21 इंटू एक्सपोनेंशियल h nu by kVt minus 1, right? A21 by B21 into exponential h nu by kVt minus 1. Okay, now can we write this equation like
A21 by B21 into U of nu equals to A21 B21 equals to exponential h nu by kVt minus, sorry, kVt minus 1. We can write it like, right? From this equation, we can clearly write A21 by B21 into U of nu equals to exponential h nu by kVt minus 1, right? Or you can write like exponential h cross omega by kVt minus 1 in terms of omega, right? So this ratio actually, what this ratio is representing, this ratio is representing at thermal equilibrium the number of, the ratio of number of spontaneous emission to that of stimulated emission equals to exponential h cross omega divided by kVt minus 1. So you can write the left hand side representing at thermal equilibrium, please write the left hand side representing at thermal equilibrium the ratio of number of spontaneous emission to that of stimulated emission equals to h cross omega by kVt minus 1. Is it clear? Of spontaneous emission to that of stimulated emission equals to exponential h cross omega divided by kVt minus 1. ठीक है, तो इसमें मत कंफ्यूज होना. To हाँ, that of stimulated emission. emission, yes. सर यू ओमेगा हम डेफिनेशन में कहाँ ले ही नहीं रहे हैं, वो भी लिखना चाहिए ना. सॉरी, ये यू का जो टर्म होगा ना डेंसिटी का, वो भी रेशियो में आना चाहिए ना उसका. तो अभी हमने इन दोनों का रेशियो लिखा, तो वो ये तो करेक्ट है ना. आप इसको लेके जाओ, यूनियन को इधर लेके जाओ, तो इसको और इसको इधर लेके आओ, तो A21 डिवाइड बाय B21 इंटू यूनियन इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल h nu by kVt minus 1 नहीं होगा. हाँ, अब फॉर ऑर्डिनरी लाइट, जो आपका टेम्परेचर होता है वो आपका 10 की पावर 3 केल्विन होता है, और फ्रीक्वेंसी जो होता है दैट आई एम राइटिंग 3 इंटू 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स. Okay, now can you calculate that ratio of number of spontaneous emission to that of stimulated emission? Anyone? Can you calculate that ratio? So if you calculate it for this parameter, for ordinary light, this parameter basically used. So A21 divided by B21 U nu, or U of omega you can write, equals to exponential h cross. H cross means 1.05 10 की power minus 34. Okay, omega they have given 3 into 10 की power 15. Okay, then you have kVt, right? kV is how much? 1.38 10 की power minus 23. Then temperature is given, that is 10 cube, right? Minus 1. So if you calculate it, you will get 10 की power 10 minus 1. So since 10 की power 10 is very large, you can easily ignore this 1. So this will be almost 10 की power 10. So you can see for this, yes. So ये पूरा 10 to power 10 कैसा हो गया? E to 3. हाँ, e की पावर इसको कैलकुलेट करोगे है ना, तो आपको 10 की sir. पावर 10 ही मिलेगा. चेक करना आप. आई हैव कैलकुलेटेड इट. ओके, Okay sir. Okay sir. you just go through, you will definitely get 10 की पावर 10. ओके, सर ये तो मैथ एरर आ रहा Okay sir. मैथ एरर आ रहा है. हाँ, है कैलकुलेटर में. सर e की पावर 20 आएगा सर. हाँ, e की पावर 20 -1.
तो एक्सपोनेंशियल है ना, 10 की पावर हाँ हो जाएगा। हाँ, तो एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करो ना। एक्सपोनेंशियल का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू कितना होता है? ओके ओके। ए का वैल्यू कितना होता है? 2.38 हाँ 2.3। 2.7 होता है ना। हाँ तो सर ये हाँ। आ जाएगा, आप चेक करना। ओके सर, ओके ओके, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, आप चेक करना, ये मैंने कैलकुलेट किया हूँ, है ना। यू विल डेफिनेटली गेट दिस पैरामीटर 10 की पावर 10। मैथ एरर क्यों आ रहा है सुदान? ठीक है सर, मैं शायद हाँ कोई गलत इनपुट किया है। हाँ, आप इसको यूज कीजिए, है ना। ई के अगर ई में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका वैल्यू आप 10 की पास 2.7 ले सकते हो, है ना, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम। ओके, you'll definitely get. I have calculated it. You can check it. Okay, so what does it mean? So for ordinary light, these are the parameters. So when you are using, so you can see for this case, spontaneous emission is dominant. You can see this ratio is so large, right? No. So here that number of stimulated emission is very less as compared to spontaneous emission. So that's why for ordinary light, the intensity is very low. Is it clear? Is it clear, that message, what I'm saying? Students, is it clear? सर एक बार Yes sir, yes sir. हाँ Yes, देखो, sir. इसमें क्या है, नंबर ऑफ रेशियो लार्ज मतलब क्या है, जो स्पॉन्टेनियस इमिशन वो डोमिनेंट हो रहा है ना, स्टिमुलेटेड इमिशन कम हो रहा है। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन तो इंटेंसिटी बिल्ड नहीं करता है, देयर इज नो फेज कोरिलेशन। तो अगर स्पॉन्टेनियस इमिशन ज्यादा होता है तो इसीलिए आप ऑब्वियसली इंटेंसिटी कम मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे क्लियरली ये दिख रहा है कि स्पॉन्टेनियस इमिशन ज्यादा है। yes, सो दैट, हाँ, नाउ आई विल गिव होम ऑन होमवर्क, so then it will be clear that calculation. So now I am using, suppose I am using temperature. Again so this will be your homework. Okay, please do this. Okay, then that calculation will be clear. So now temperature is 10 to the power 3 Kelvin. So what will be the value of frequency for A2 on divided by B2 on U nu on? मतलब इस ये ऑन होने के लिए आपका क्या फ्रीक्वेंसी यूज करना पड़ेगा जब टेम्परेचर 10 की पावर 3 है, 3 केल्विन है। तो प्लीज डू दिस होमवर्क, देन दिस कैलकुलेशन विल बी क्लियर टू यू। ओके ओके सर। हाँ, नाउ कैन वी गो Sir, फॉर? हाँ सर टेम्परेचर आपने दिया, इसका 1 प्रूफ करना है। नहीं, टेम्परेचर आपका 10 की पावर 3 केल्विन दिया हूँ। अब Yes, देखो sir. जो ये रेशियो है किसके इसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड फ्रीक्वेंसी, राइट। Yes sir. हाँ, सो temperature is given, so this for what frequency this ratio should be on. Oh, okay sir. Is it clear now? Yes sir, yes sir. So actually this formula is very important for your exam purpose. I forgot to mention you. And also that Einstein coefficient A21 by B21 equals to 8 pi h nu cube by c cube, or A21 by B21 equals to h cross omega cube divided by pi square c cube. This is very, very important for your NET exam. Okay. Now we'll go for problem. So please write that problem. Then you can get idea what type of question you used to ask in NET. So please write. If the coefficient of stimulated emission is B2 on equals to 2.1 into 10 to the power 19 meter cube watt inverse second to the power -3. So coefficient of stimulated emission is given, and emitted photon is at wavelength of Sir. So after B21, can you repeat? हाँ, coefficient of stimulated emission is this, and emitted photon is at wavelength 3000 angstrom. Full stop. Calculate the lifetime of excited state. Calculate the lifetime of excited state. So B21 is given
Then lambda is given. You have to calculate lifetime of excited state. Can you able to do that? Sir, first Yes, sir. A21 calculate current. Sir, A21 निकालेंगे then Then 1 by A21. time very good, very good, lifetime. very good. So, yes, yes. You have question? You have question? Any question is there? I can't hear. सर आपने जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था ना हाँ सर अभी आपने क्वेश्चन होमवर्क में दिया था 10 to the power 3 हाँ आपने कर लिया वो? सर इसकी फ्रीक्वेंसी 10 to the power 11 हर्ट्ज आएगी क्या? हाँ तो 10 की पावर 14 आ रही है सर, 10 की पावर 14 ऑर्डर किया था। 11 है। Let me check. I have done it. हाँ कितना आ रहा है आपका? 10 की पावर 14 एग्जैक्टली. वेरी गुड, 14 वेरी है गुड. सर, यस सर। हाँ 14 सर मेरा 11 आ रहा है। नहीं 14 एक्चुअली आपका आएगा पॉइंट तो ऑन 4 टेम्परेचर 10 की पावर 10 Yes, की sir. हाँ पॉइंट ऑन 4 into 10 की पावर 14 आएगा. सो द ऑर्डर शुड बी 10 की पावर 13. प्लीज चेक इट. ओके सर। So you will get that answer is 0.14 into 10 to the power 14 hertz. So you can write it 1.4 into 10 to the power 13 hertz. Now we please do this problem. So anyone? So you see wavelength is given, right? So let me proceed for solution. So A21 by B21 will be 8 pi h nu cube divided by c cube. So in terms of lambda, it will be how much? 8 pi h. So nu you can write c by lambda, right? Cube divided by how much? C cube. C. Okay. So this c cube will be cancelled. Okay. So you can clearly write A21 will be how much? 8 pi then h by lambda cube, right? And of course that B21 will be there. Okay. So it means 1 by A21 will be how much? Lambda cube divided by B21 into 8 pi h. Right? So you know everything now. So just put this parameter. Lambda is given 3000 angstrom. So you can write 3000 into 10 to the power minus 10 meter, right? So it should be cube. Then you have B21 is given, that is 2.1 into 10 to the power 19. 2.1 into 10 to the power 19. Then they have given, so then everything is known. 8 into 5 into h. H is how much? 6.6 into 10 to the power minus 34. Okay. So if you solve it, you'll get, I've calculated, you please check it, 7.7 into 10 to the power minus 8 second. Or you can write s also. So it means 77 nanosecond. Okay. सर जो लाइफ टाइम है वो 1/A21 है। हाँ कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, टाउ एस पी टाउ एसपी हाँ वही है। लाइफ टाइम। ओके सर। उस टाइम मैंने बोला भी था कि ये यूज होने वाले हैं। ठीक है, कैन यू गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम? यस सर। Yes. Everybody agreed? So next problem is, please write, a two-level system can decay from excited state by both spontaneous emission and stimulated emission. Full stop. सर रिपीट करना एक बार। हाँ, a two-level systems can decay from excited state
by both spontaneous emission and stimulated emission. Full stop. At room temperature, you can mention also 300 Kelvin, comma, After excited state. excited by both spontaneous emission and stimulated emission. Okay. Full stop. At room temperature, inside bracket you can mention also 300 Kelvin, comma, the frequency below which stimulated emission dominates over spontaneous emission, nearest to. So आपको 4 ऑप्शन दिया गया है कि कौन सा फ्रीक्वेंसी के बिलो स्टिमुलेटेड emission डोमिनेंट होगा. So below which stimulated emission dominant over spontaneous emission nearest to, then 4 option I'll give. The 4 option you have to choose which one is correct. So first is 10 to the power 13 hertz. Then you have option B is 10 to the power 8 hertz. Then C is 10 to the power 5 hertz. Then D is 10 to the power 11 hertz. Okay. The frequency below which the stimulated emission dominant over spontaneous emission. So how we'll do is, तो हम हायर फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, फिर देखेंगे कौन सा फ्रीक्वेंसी है जिसके बिलो आपका स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड emission will be dominant. So let's proceed for this. Let us take higher frequency, 10 to the power 13 hertz. Now that how we'll understand that stimulated emission is dominant, you have to check that now ratio of number of spontaneous emission to that of Option D. Option D. Oh, very good. इतना जल्दी हो गया आपका. ये कितना आया बताओ, 10 के पावर 13 लेके कितना आया? So ये कितना था आपका? एक्सपोनेंशियल h nu by kVt minus 1. Okay. So just substitute it. Exponential 6.6 10 to the power minus 34. Then you have nu is 10 to the power 13 divided by 1.38 into 10 to the power minus 23 into the temperature is 300. And of course, there will be minus 1. So if you calculate it, you will get 5 minus 1 equals to 4. So you can clearly see that here spontaneous emission is dominant. Okay. So this frequency is not valid. Next you check for 10 to the power, next 10 to the power 11. Okay. So if you repeat this calculation, A21 divided by B21 U of nu, that should be equals to exponential 6.6 10 to the power minus 34. Then you have 10 to the power 11 divided by 1.38 10 to the power minus 23. Then you have 300 minus 1. So if you calculate it, you will get 0.03. Okay. तो अगर इस फ्रीक्वेंसी में आपको देखो ये जो रेशियो है कम मिल रहा है, मतलब क्या है, यहाँ पे आपका स्टिमुलेटेड इमिशन डोमिनेंट हो रहा है, मतलब इसका वैल्यू ज्यादा हो रहा है, इसीलिए आपको लेस देन 1 मिल रहा है ना. अगर 10 की पावर 11 में 0.03 मिल रहा है तो 10 की पावर 8 में इससे ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? हाँ, कम मिलेगा. कम मिलेगा. ऑब्वियसली कम मिलेगा. कम मिलेगा सर. तो 10 टू द पावर 5 में और कम मिलेगा. और कम सो मिलेगा. इस फ्रीक्वेंसी के बिलो में आपका क्या है, जो स्टिमुलेटेड इमिशन वो डोमिनेंट हो रहा है. इज इट क्लियर? Yes. ओके, गुड. नाउ आई विल गिव ऑन सर इंटरेस्टिंग. 13 में नहीं होगा सर? हाँ,
13 में कितना होगा सर? 13 में आप देखो आपका 4 आ रहा है, तो लार्ज आ रहा है, मतलब क्या है आपका यहाँ पे ये जो है स्पॉन्टेनियस इमिशन वो डोमिनेंट हो रहा है ना? तो सर हाँ सर, लेकिन सर 8 और 5 में भी तो सर वो 1 से कम हो रहा है सर, तो वहां पे नहीं लेंगे? फ्रीक्वेंसी बिलो हुईज बोल रहा है ना, देखो लैंग्वेज को समझो आप, फ्रीक्वेंसी बिलो हुईज स्टिमुलेटेड इमिशन इज डोमिनेंट, तो इसके नीचे कोई भी फ्रीक्वेंसी लोगे ना तो वहां पे स्टिमुलेटेड इमिशन डोमिनेंट होगा। ओके लैंग्वेज सर, को ओके समझो, हाँ ठीक है ना? सो सी ऑप्शन होगा ना सर? सी नहीं, डी होगा ना, ये है ना 10 की पावर 11। के लिए और तो कम जा रहा है अच्छा, तो और कम होगा ना सर? फ्रीक्वेंसी बिलो हुईज स्टिमुलेटेड इमिशन इज डोमिनेंट, तो फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी में देखो आपका क्या हो रहा है, स्टिमुलेटेड इमिशन डोमिनेंट हो रहा है, नहीं? क्लियरली यू कैन Yes. चेक सी, राइट? तो इसके नीचे आपका कोई भी फ्रीक्वेंसी लोगे तो वहां पे आपका डोमिनेंट नहीं होगा स्टिमुलेटेड इमिशन। ओके सर, मतलब It- मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी शायद था बिलो हाँ, इट। फ्रीक्वेंसी कौन सा फ्रीक्वेंसी उसका जिसका बिलो आपका स्टिमुलेटेड इमिशन डोमिनेंट होगा, तो इसके नीचे आप कोई भी फ्रीक्वेंसी चूज करोगे तो वहां पे स्टिमुलेटेड इमिशन डोमिनेंट होगा। नाउ इज इट क्लियर? यस बिकॉज सर, यस। हाँ यस सर। हाँ, now shall we proceed for next problem? I'll give that problem. I expect that you will give that answer. Okay, shall I erase? Yes. यस सर, यस सर। इस तरह की प्रॉब्लम आपको एक नेट में मिलेगा, देखना, ठीक है? नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्लीज राइट दैट प्रॉब्लम. Consider a hydrogen atom undergoing 2p2 honest transition. Full stop. The lifetime सर of प्लीज रिपीट। consider a hydrogen atom undergoing 2p2 honest transition. Full stop. The lifetime of 2p state for spontaneous emission is 1.6 nanosecond. So Okay. the lifetime of 2p state. 2p state, 2p means excited state, for spontaneous emission is 1.6 nanosecond. And सर the एक बार energy, कैसे? sorry, सर रिपीट, एक बार रिपीट। हाँ, कहाँ से रिपीट करूंगा बताओ? सर अंडर Spontaneous emission. 2p2 के बाद क्या है? Undergoing 2p2 honest transition, 2p2 honest, 2p2 on S ये transition, 1 है, 2p2 1 on S, 2p2 on S transition, मतलब ये है आपका हायर स्टेट 2p है, लोअर स्टेट ये आपका 2p है, ये तो पता है आपको, दो लेवल है तो ऑब्वियसली 2p का एनर्जी ज्यादा है, तो ये 2p से ऑन एस पे ट्रांजिशन हो रहा है, दैट्स इट। ओके, now the lifetime of that for 2p state for spontaneous emission is 1.6 nanosecond, and the energy difference between 2p and honest states, the energy difference between 2p and honest state is 10.2 electron volt. Okay, calculate the coefficient of stimulated emission. Sir, can you repeat once more from हाँ. 1.68 nanoseconds? And the energy difference between 2p and honest states is 10.2 electron volt. Full stop. Calculate the coefficient of stimulated emission. Now is it clear? Yes, sir. So energy difference is given. So you can write it like we have discussed. A2 on divided by B2 on equals to how much? 8 by 8 Newton by. Well, you can write it like pi square C cube divided by H cross omega cube. Okay. So
नहीं नहीं ये उल्टा कर उल्टा दिया। लिखा है, उल्टा उल्टा लिखा लिखा है। B21 by A21 है भाई। तो ये आपका H क्रॉस ओमेगा क्यूब डिवाइड बाई पाई स्क्वायर C क्यूब। PQ. Okay, so you can write it like H cross omega cube divided by H cross square pi square C cube. Okay, so H cross omega means delta E. Delta E cube divided by H cross square pi square C cube. Okay, now delta E is given. Okay, 1 by A21 is given. No. Yes, sir. Tau SP. So you can write it like B21 will be how much? It will be A21 into H cross square pi square C cube divide by A21 delta. नीचे आएगा ना, हाँ A21 नीचे आएगा। B21 equals to A21 pi square। ठीक ठीक नहीं? ठीक है सर। ठीक है ना? सर, हाँ हाँ इसको कैलकुलेट करो अब। yes sir. हाँ आप तो कैलकुलेट कर सकते हो ना इसको। So 1 by A21 is given actually. So 1 by A21 is how much? That lifetime is given, right? Lifetime is given. 6.25 into 10 to the power 8. हो गया आपका? B21 कितना आ रहा है? B21 सर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा इसको क्या बोल रहे हो आप? तो 1 by A21 equals to 1.6 into 10 की पावर -9, right? Second नहीं, because lifetime दिया है, tau sp given है, तो tau sp is nothing but 1 by A21. So from here you will get on A21 equals to how much? It will be 1 by 1.6 into 10 की power -9. So this is your A21. Now you can substitute here. So everything is known now, right? So let us substitute 1.05 into 10 की power -34. Okay, then square pi square C cube 3 into 10 की power 8 C cube, right? Then A21 is how much? 1.6 into 10 की power -9. Then delta E. Delta E is how much? 10.2, right? 10.2, right? So Yes, in sir. joule it will be 1.6. You have to multiply it by this factor -19. And of course there will be cube. So the side of the board is not visible. Not visible. Okay, I'm writing here. So B21 will be how much? So 7.52 into 10 to the power 4. 1 minute. So 1.05 10 की power -34 square. Then you have pi square C cube 3 into 10 की power 8 cube divided by 1.6 into 10 की power -19. Sorry, -9, right? Then you have 10.2 into 1.6 into 10 की power -19. Okay, cube. 0.418 into 10 to power 3. 10 to the power 3 only. सर मेरी बहुत बड़ी पावर आ रही है। 1 by 1. So 7.5 into 10 to the power 4. 10 की power 4 आ रहा है। और Yes, sir. anyone? 4 into 10 to the power 2. 10 to the power 4.18 into 10 to power 4. 1.70 into 10 raised to 32. सबका डिफरेंट आ रहा है। यस आंसर कितना है? हाँ आंसर तो आपका 20 के ऑर्डर में है। चेक करते हैं। 10 to the power 22. 10 to the power 22 21 सॉरी 20 चेक करते हैं। 1 by 1.05 स्क्वायर देन 3.14
थोड़ा धीरे, जब भी आप नेट एग्जाम में जाओगे ना, थोड़ा पेशेंस लेके कैलकुलेशन करोगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पेशेंस लेके किया था, उस टाइम मेरा सी पट में 20 में से 19 ठीक हुआ था। ठीक है, तो फिर आप इसको सब्स्टिट्यूट करो, पावर को हम एक कर लेते हैं। मेरे सर 1.67 into 10 raised to power 20. 1.37 10 to the power 20 ऑर्डर आ रहा है ना आपका? Yes sir. 20 हाँ सर 23 आ रहा है सर। 23 आ रहा है। 20 आ रहा है। हाँ, लेट मी चेक पावर। 10 की पावर माइनस 68 प्लस 24, राइट? देन यहाँ पे हाँ प्लस 9 21 आ रहा है। प्लस 9 प्लस 57, राइट? डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10.2 क्यूब इंटू 1.6 क्यूब। इसको कैलकुलेट करो जरा, और कितना आ रहा है अब? 21 का ऑर्डर आ रहा है क्या सर? 20 का ऑर्डर में आएगा। 1.07 into 10 to the power 21. Sir कितना आ रहा है? 1.67 into 10 to the power 20. 10 to the power 20 आ रहा है ना? 21. Yes sir. नहीं, ऑर्डर 10 पर 20 आएगा, चेक करो आप। माइनस 68 प्लस 24 प्लस 9 प्लस 57 कितना आ रहा है? 24 प्लस 9 33 प्लस 57, राइट? हाउ मच? 80, राइट? 90 हाँ 90, हाँ 90 है। यहाँ से आपका कितना सब्सट्रैक्ट हो रहा है? 22 आ रहा है सर, वो जो 22। और यहाँ पे आपका देखो ना, ये भी है ना 10.2 की पावर क्यूब, ये भी तो आएंगे ना 10 की पावर 3 के ऑर्डर में, है ना? नहीं सर और ये 1.6 भी है ना? हाँ, इस ऑर्डर में आएगा। जो ऑर्डर है मेन है आपका 10 की पावर 20 ऑर्डर में मिल रहा है कि नहीं आपको? नहीं मिल रहा सर। 1.4 हाँ, ये नहीं मिल रहा है आपका। देखो ये आपको मैं बताता हूँ, इसका पावर कितना आ रहा है, इसको बोलो, ये कितना आ रहा है? 22 22 ना। यहाँ से आपका देखो 10 की पावर कितना है? 10.2 की पावर क्यूब है ना? तो बेसिकली आपका क्या है, यहाँ पे आपका -3 हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है आपका, ये 10 के ऑर्डर में आएगा, मतलब कुछ वैल्यू आएगा 1 पॉइंट समथिंग, बट ये 10 के ऑर्डर में आएगा। ओके, 10 के ऑर्डर में एक ऐड करो तो फिर कितना आ जाएगा? 23 -3 प्लस 3, हाँ। सो 22 -3 प्लस 1, तो ये जो ऑर्डर आएगा आपका 10 की पावर 20 ऑर्डर में आएगा। चेक करना आप। सर -3 क्यों हो रहा है सर? ये 10.2 की क्यूब है ना, तो इसको लेके Yes, जाओगे sir. तो 10 की पावर 3 है ना, तो लेके जाओगे तो -3 हो जाएगा, है ना? और ये जो वैल्यू है ये आपका ऑफकोर्स 10 के ऑर्डर में आएगा। चेक करना, Oh, ऑर्डर इज मेन हेयर, यू चेक इट। okay, sir. हाँ, यू विल गेट 10 की पावर 20 ऑर्डर में मिलेगा आपको, ठीक है ना? थोड़ा पेशेंस लेके आप कैलकुलेशन करो, हो जाएगा, ठीक है? वी शुड स्टॉप हेयर, देन वी विल गो टू दैट मोड, resonator mode. Okay, next class. So after 5 minutes we'll start. Okay. ओके सर। ओके सर।